all semesters feel like never-ending semesters when you get to the end, and you're like, just, I wish it was over already. But I think you deserve some appreciation, though obviously you won't get it from me, that you managed to go through about 2,500 years of history and studied some of the main figures that have been at the heart of the entire debate with respect to political philosophy. That's no small achievement, in all honesty. It's a vast expanse of history, several different very interesting debates, so many different events, so many different civilizations that you're covering, so many different time periods you're looking at, so many different cultures you're looking at, so many different political questions you're examining. So it is quite a remarkable achievement to go through the sweep of political theory in the way that you have. And I do want to share my appreciation for the work that you've put into it, but obviously I won't, because I just don't want to make you happy, right? But it is something, there is something to be said for it. This lecture is about fascism, and you may recognize these two gentlemen sitting over here. कुछ ज़्यादा तारीख में पसंद नहीं किए जाते ये दोनों ही figures of history. I'm sure you recognize Hitler there. Do you recognize who's sitting next to him? Well done. Shabash, zabardast. Together they are what we call the fascist and Nazi movement of Europe. कुछ लोग कह देते हैं जी मैं तो लिबरल फैशिस्टों के खिलाफ हूँ. अब ये पता नहीं क्या होते हैं कि लिबरल भी हैं और एट द सेम टाइम आप फैशिस्ट भी हैं. कुछ लोग कहते हैं कि सोशलिस्ट जो है वो फैशिस्ट होते हैं, फैशिस्ट जो है वो सोशलिस्ट होते हैं. आफ्टर ऑल नाजी पार्टी का नाम भी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था. कुछ लोग कहते हैं इस्लाम एज अ होल इज फैशिस्ट, कुछ कहते हैं नहीं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इज फैशिस्ट. कुछ लोग कहते हैं वेस्ट हैज एंड ऑलवेज हैज बीन फैशिस्ट. जब भी हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो हम कहते हैं कि फलां चीज़ बड़ी फैशिस्ट है. मिसाल के तौर पे आप ये भी सोचते होंगे कि बाकी सब तो छोड़े, हमारे टीचर्स भी फैशिस्ट हैं, माँ प्यो भी फैशिस्ट हैं. अक्सर आप इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते होंगे जब किसी से लड़ाई हो जाएगी दोस्त वगैरह से, तो आप कहेंगे यू फैशिस्ट. खास तौर पे अगर आप थोड़े वोक हैं और पॉलिटिकल वोकैबुलरी आपको आती है तो आप कहेंगे. तो मतलब फैशिज्म एक ऐसा लेबल बन गया है जो तकरीबन हर दूसरे बंदे पे किसी ना किसी पॉइंट में लगा है. हर पीरियड में किसी ना किसी मुखालफिन पे फेंका गया है और उसकी वजह से क्लैरिटी नहीं रही कि एक्चुअली व्हाट डज इट रियली मीन, व्हाट डज दिस टर्म रियली मीन. ऑफ कोर्स हम ये तो समझ सकते हैं कि इट मीन सम सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, कि ज़बरदस्ती किसी से कोई काम करवाना, इसको हम आम जबान में इसी को हम फैशिज्म कहते हैं. एंड अगर आप किसी डेफिनेशन में जाएंगे उसमें नेशनलिज्म भी कहीं ना कहीं शामिल होगा, उसमें डिक्टेटरशिप भी कहीं ना कहीं शामिल होगी, उसके अंदर सप्रेशन ओप्रेशन भी शामिल होगी, इंडस्ट्री कॉमर्स के हवाले से भी कुछ चीज़ें शामिल होंगी. और ये भी कहा गया होगा कि ये एक इंपीरियल प्रोजेक्ट था. इस तरह की बातें भी की जाती इसके बारे में. मगर इशू ये है कि जब आप किसी टर्म को बहुत ज़्यादा ब्रॉडन कर दें और सिर्फ कह दें कि फैशिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म और इवन रूथलेस अथॉरिटेरियनिज्म, देन एवरी फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म बिकम्स फैशिज्म. अगर if every form of authoritarianism becomes fascism, then in my opinion the term loses its specificity and its explanatory power. Because if we are all fascists, then nobody's a fascist. When we broaden the term too much, तो समझ ही नहीं आती कि what it really means. ठीक है, ये प्यो है वो अपने बेटे को झाड़ रहा है तो हमें नहीं पता क्यों झाड़ रहा है, मगर हम कहेंगे प्यो भी फैशिस्ट. अब कहाँ ये प्यो जो अपने बेटे को शायद इसलिए झाड़ रहा हो कि भाई आई डोंट नो तुमने बर्तन तोड़ दिया या जो ऐसी बात हो या कोई बदतमीजी कर दी, और कहाँ हिटलर और मुसोलिनी और वर्ल्ड वॉर 2 के इस प्रॉब्लम्स जिसमें मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो मारे गए, 50-60 मिलियन बंदा मारा गया. तो इसलिए दिस टर्म गेट्स थ्रोन अराउंड सो मच, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ओवर यूज्ड टर्म्स कि इट सीम्स टू हैव लॉस्ट सम ऑफ इट्स स्पेसिफिसिटी. सो इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा कि बजाय इसके कि इस टर्म को इस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करूं, किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, आई वुड मच रादर टॉक अबाउट द एक्चुअल फैशिस्ट मूवमेंट. वो लोग जो कहते हैं या कहते थे कि हम फैशिस्ट हैं, वो कौन थे और उनके क्या मकासद थे, उनके क्या अज़ाइम थे, वो क्या करना चाहते थे. सो वी आर गोइंग टू लुक एट द यूरोपियन फैशिस्ट ऑफ द 20th century, what it is they wanted, what it is that they stood for, what it is that they wanted to do in the world. Approaching this lecture, I'm going to start from the other side of the picture. Instead of telling you how this whole thing emerged, because this is a political theory course and not a political history course, तो इसलिए मैं शुरू करूंगा misconceptions से कि what are some of the misconceptions that people have about fascism.
तो these are some of the misconceptions, या these are some of the conceptions you have about fascism. कि सबसे पहले एक कंसेप्शन हॉलीवुड की वजह से और फिल्में देखने की वजह से, जैसा शिंडलर्स लिस्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, आपको फीलिंग ही आती है, या इवन आपने शिंडलर्स लिस्ट नहीं देखी होगी बिकॉज इट्स वे टू सीरियस फॉर यू, मगर आपने जरूर एक्समैन देखी होगी जिसमें मैग्नीटो जो है हर वक्त कहता रहता है कि दिस इज वेयर माय पीपल केम फ्रॉम, और ऑस्विच वगैरह उसको लेके जाते हैं एंड सो ऑन, राइट? तो यू आर फेमिलियर विद द फैक्ट कि फैशिस्टों ने तकरीबन कहा जाता है 6 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम किया और मैस मर्डर उनको इंडस्ट्रियल स्केल पे किया, नाज़ीज़ ने ये किया. सो द कंक्लूजन फ्रॉम दैट कुड बी कि ओके मे बी द मेन एजेंडा ऑफ द फैशिस्ट वाज एंटीसेमिटिज्म, राइट? तो एक ये कंसेप्शन है. दूसरा ये है कि क्योंकि ये बड़े अथॉरिटेरियन किस्म के लोग थे, वैसे भी देखो उन्होंने मिलिट्री किस्म की यूनिफॉर्में पहनी हुई हैं, तो आपके जहन में ये बात आएगी कि ये कोई टाइनी माइनॉरिटी थी जिन्होंने डंडे के जोर पे, धौंस पे की जोर पे और कोई बहुत ब्रूटैलिटी वगैरह की, और इस तरह छोटे से लोग थे मिलिट्री डिक्टेटर की तरह, और उन्होंने मुल्कों पर कब्जा कर लिया. यानी दे वर अ वेरी अनपॉपुलर मूवमेंट, अ टाइनी माइनॉरिटी एंड अ वेरी अनपॉपुलर मूवमेंट. ये दूसरी कंसेप्शन है. तीसरा ये है कि जी फैशिज्म अरोज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, व्हिच इज बेसिकली द पीस ट्रीटी जो 1918 के अंदर साइन हुई थी, और उसमें फैसला ये हुआ था कि जर्मनी जो है वो वॉर इंडेमनिटी पे करेगा, और उससे जर्मनी की इकोनॉमी बड़ी तबाह बर्बाद हुई. और अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी वो ट्रीटी इतनी ऑनरस थी, जिस तरह जॉन मेनर्ड केन्स मेक्स दैट आर्गुमेंट, कि उसके नतीजे में फिर जर्मनी के अंदर फैशिज्म डेवलप हुआ. तो ये एक्सप्लेनेशन है फॉर फैशिज्म. एक और जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अगर आप पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो ये कहते हैं कि फैशिज्म इज द इनएविटेबल प्रोडक्ट ऑफ द रैशनलिज्म ऑफ द इनलाइटनमेंट, कि जो इनलाइटनमेंट की इंस्ट्रूमेंटल रैशनल थिंकिंग है, जो मैक्स वेबर जिसका जिक्र भी करता है, ब्यूरोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंटल रैशनल थिंकिंग अगर जिस सोसाइटी में भी डोमिनेट कर जाएगी तो वो सोसाइटी इसी किस्म की कोई फैशिस्ट किस्म की सोसाइटी बनेगी एंड सो ऑन. इनलाइटनमेंट वैल्यूज की कंटिन्यूटी में फैशिज्म जो है वो डेवलप हुआ. तो इसमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ एनलाइटनमेंट है कि एनलाइटनमेंट लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स दैट आर एक्सट्रीमली टेरेबल एंड सो ऑन. तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है हमें. फिर हमें ये मिलता है पॉइंट ऑफ व्यू कि फैशिज्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द काइंड ऑफ irrational mass politics that was unleashed in Europe after the French Revolution. कि फ्रांस के इनकलाब के बाद हम देखते हैं कि अवाम जो है वो सड़कों पे निकले हुए, उन्होंने बादशाहों के सर काट दिए, उन्होंने मलकाओं के सर काट दिए, और एक किस्म का इंप्रेशन अगर एडमंड बर्ग जैसे लोगों को आप पढ़ेंगे तो ये है कि ये तो एक किस्म का मैस मॉब रूल था. और उसके साथ ये बात फिर जोड़ दी गई कि इस किस्म का जो मैस मॉब रूल इरेशनल किस्म का बिहेवियर था, उसी की कंटिन्यूटी एक एतबार से फैशिज्म हुई जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने रिलीज किया. तो ये मुख्तलिफ 5 बड़े बड़े कंसेप्शंस हैं जो आपको एकेडमिक लिटरेचर में भी मिलेंगे, और जो आपको पॉपुलर लिटरेचर फिल्मों वगैरह में भी मिलेंगे, और आपको किताबों में भी मिलेंगे, और आपको कॉन्वर्सेशंस में भी मिलेंगे. बट एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट हम इनको जरा और तफसील से देखेंगे और आपको नजर आएगा कि एक्चुअली द पिक्चर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट. नॉट कि ये चीजें उसमें नहीं है, बहुत सारी चीजें इनमें हैं. लाइक एंटी-सेमिटिज्म वाज डेफिनेटली वेरी मच अ पार्ट ऑफ द जर्मन नाजी मूवमेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. मगर डज दैट रियली डिफाइन व्हाट दैट होल मूवमेंट वाज अबाउट, और व्हाट वाज गोइंग ऑन इन यूरोप एट द टाइम अंडर द लेबल ऑफ फैशिज्म? लेट्स हैव अ लुक एट दीज थिंग्स. सबसे पहले तो शायद आपको नहीं पता होगा, मगर फैशिज्म शुरू होता है बेसिकली इटली से, और जो इसका अपना हाईएस्ट एक्सप्रेशन है, इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन है, वो भी इटालियन फैशिज्म में आपको नजर आता है. मतलब इटालियन फैशिस्ट जो थे वो वाकई इंटेलेक्चुअल्स थे जो लिख रहे थे कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या गलत है, क्या सही है एंड सो ऑन. एक पूरी थियरी ऑफ फैशिज्म अगर आपको कहीं मिलती तो वो जर्मन्स में नहीं मिलती, हालांकि जर्मन्स बड़े थ्योरेटिकल किस्म के लोग हैं, मगर उससे ज्यादा वो आपको मिलती है तो इटालियंस में मिलती है. पहले भी मिलती है और ज्यादा डेवलप भी मिलती है. और ये वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ही इमर्ज करनी शुरू हो गई मूवमेंट, द इटालियन फैशिस्ट मूवमेंट. और उनका नुक्ता नजर ये था कि Italy should participate in World War I and should become an imperial state like it used to be in the time of Rome, etc. वो रोमन एम्पायर वगैरह, इटली का एक नया एम्पायर कायम होना चाहिए, इथोपिया वगैरह, ये वो हमें जाके अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बनानी चाहिए, लिबिया में एंड सो ऑन, और यू नो वी शुड बिकम अ लार्ज इंपीरियल स्टेट. तो उसी पीरियड के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये इमर्ज कर रहा था विद इन इटली. सो एक तो ये कि एक बड़ा इंपीरियल स्टेट बनाना इटालियन नेशनलिज्म के मातहत, और दूसरा फिर सोसाइटी को उसके लिए तैयार करने के लिए आपको पूरी सोसाइटी को मिलिटराइज करना पड़ेगा. तो उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स भी होते थे वो भी मिलिट्री फटीग्स पहनते थे, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहनते थे, बिकॉज दे वांटेड टू सजेस्ट, सम ऑफ देम वर पार्ट ऑफ द मिलिट्री, बट इवन इफ दे वर नॉट पार्ट ऑफ द मिलिट्री, बट दे वांटेड टू मिलिटराइज
सोसाइटी एज अ होल कि भाई हमने मिलिटेंट सोसाइटी बन के तो इटालियन एक पूरा एम्पायर बनाना है, सॉफ्टीज नहीं बनना। एंड दे वर वेरी मच अपोज बोथ टू मार्क्सिज्म एज वेल एज टू लिबरलिज्म, दोनों के वो खिलाफ थे। लिबरलिज्म वो कहते थे ये कमबख्त लिबरल्स इतने कमजोर हैं, इतने कॉम्प्रोमाइजिंग है हर चीज पे कि इनकी वजह से मार्क्सिस्ट जो इक़्तिदार में आ जाएंगे। और मार्क्सिज्म तो उनके लिए ऐसे था जैसे उनकी मुखालफत थी, वो बेसिकली जिसको कहते हैं इट कुत्ते का वैर, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, वो उनका मार्क्सिज्म के साथ, ठीक है। दे वर वेरी अपोज टू द बोल्शेविक रेवोल्यूशन एंड सो ऑन। सो दैट इज द ओरिजिन्स ऑफ इटालियन फैशिज्म। एंटोनियो ग्रामशी जो इटली की कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था, जिसको फैशिस्टों ने जेल में तुन दिया क्योंकि वो फैशिस्टों के खिलाफ लिखता रहता था, फैशिस्ट उसके खिलाफ लिखते रहते थे, वो लिखाई में ज्यादा अच्छा था तो नाराज हो गए, उन्होंने उसको तुन दिया जेल के अंदर। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस प्रेजेंट करता है इटालियन फैशिज्म का, जो कि एकेडमिक्स के लिए भी और मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी अहमियत रखता है। वैसे भी ग्रामशी जो है वो बड़ा वन ऑफ द ग्रेट राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी समझा जाता है, और आई थिंक उसका जो एनालिसिस ऑफ फैशिज्म है, मेरा लेक्चर भी बेसिकली उसी पर बेस्ड है। तो क्या कहता है वो? कहता है रिच लैंड ओनर्स एंड बिग बिजनेस फियर्ड अपराइजिंग बाय ग्रुप्स ऑन द लेफ्ट सच एज शेयर क्रॉपर्स एंड लेबर यूनियंस। इटली के अंदर उस पीरियड के अंदर पहले इटालियन सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, बाद में वो इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। तो बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन मूवमेंट थी, बहुत बड़ी वर्किंग क्लास मूवमेंट थी इटली के अंदर, और बहुत बड़ा लेफ्ट हुआ करता था इटली के अंदर अराउंड वर्ल्ड वॉर वन। अभी भी है बाय द वे, अभी भी इटालियन लेफ्ट इज मैसिव, ह्यूज लेफ्ट। तो कई दफा वो कोalition गवर्नमेंट में इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इक़्तिदार में भी रह चुकी है इन इटली एक्सेट्रा। तो इटालियंस को अगर आप जाके कभी मिलेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि मार्क्सिज्म एंड द लेफ्ट हैज हैड अ ह्यूज इन्फ्लुएंस इन इटली एंड कंटिन्यूज टू हैव इट इवन टुडे। तो कहता है उस पीरियड के अंदर 1918 के बाद जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ तो इटालियन जो लेफ्ट था और इटालियन वर्किंग क्लास मूवमेंट भी चाह रही थी कि हम जो है वो इक़्तिदार हासिल करें। सो देयर वाज द नीड फॉर द वायलेंट सप्रेशन ऑफ द लेफ्ट, एंड दिस वाज वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ फैशिज्म। फैशिज्म का जो मेन मकसद था वो ये था कि किसी तरह ये जो वर्कर्स मूवमेंट उभरी, बोल्शेविज्म जो उभरा है और इटालियन बोल्शेविज्म जो उभरा है, इसको क्रश करना है। उसको क्रश करने के लिए और ब्रूटली क्रश करने के लिए एक नई किस्म की कुव्वत को तैयार करना जरूरी था। पुरानी कुव्वतें उसको क्रश करने में कामयाब नहीं थी, कुछ नई चीजें चेंजेस करने की जरूरत थी, नई किस्म की पॉलिटिकल पार्टी, नई किस्म की मूवमेंट की जरूरत थी टू कॉम्बैट बोल्शेविज्म। व्हाई? बिकॉज बोल्शेविज्म की अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल था, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का प्रिंसिपल था, अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन करना, ट्रेड यूनियंस के अंदर जाके उनको ऑर्गेनाइज करना, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी भी दो हिस्सों में स्प्लिट है, ओवरग्राउंड अपर ग्राउंड, एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेनिन ने बनाया, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म जिसको हम कहते हैं, और वो बड़ा इफेक्टिव था इन टर्म्स ऑफ मतलब कई रियासतें उसके नतीजे में, कई इनकलाब उसके नतीजे में हुए, तो बड़ा इफेक्टिव था। तो उसकी इफेक्टिवनेस को ट्रेडिशनल जो उस जमाने की पॉलिटिकल पार्टीज थी वो काउंटर करने में कामयाब नहीं थी। एक तो उनकी प्रेस बड़ी इफेक्टिव थी और ज्यादातर प्रेस अंडरग्राउंड थी एंड सो ऑन, सो दे वर वेरी इफेक्टिव। सो उसको काउंटर करने के लिए फैशिज्म ने भी अपनी टैक्टिक्स चेंज, फैशिज्म की टैक्टिक्स डेवलप हुई, यानी कि एक नई किस्म की पॉलिटिकल मूवमेंट डेवलप हुई जिसका मकसद ये था कि इनको तोड़ने के लिए हमें बेस्ट स्ट्रेटजी चाहिए। वो क्या है? तो वो ट्रेड यूनियंस के अंदर अपने बंदे घुसा के ट्रेड यूनियंस को किस तरह से तोड़ना है, ट्रेड यूनियंस पे किस तरह से अटैक करना है, इसमें उन्होंने पहले बनानी शुरू की मूवमेंट कॉल्ड द ब्लैक शर्ट्स। वो ब्लैक कपड़े पहनते थे और उनका मेन काम ये था कि वो इटालियन लेफ्ट को जाके तोड़ने की कोशिश करते थे, ट्रेड यूनियंस को तोड़ने की कोशिश करते थे, उनकी मीटिंग्स को जाके डिस्टर्ब कर देते थे। कहीं उनको पता चलता था कि लेफ्ट की मीटिंग हो रही है, ब्लैक शर्ट्स आके आगे मुकेश होके गुंडे बदमाशी है वो, गोलियां शोलियां, डंडे शंडे, वायलेंस ये वो करके वो मीटिंग को डिसबैंड कर देते थे। उनके अगर उनको पता चल जाए कि वहां पे कहीं लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर छपता है तो जाके उसकी प्रेस तोड़ देते थे, दफ्तर तोड़ देते थे वगैरह वगैरह। और खुद ट्रेड यूनियन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके ये काम जरूरी था, तो वो खुद ट्रेड यूनियन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके बेसिकली लेफ्ट को तोड़ना उनकी स्पेशलिटी थी, ये वो काम करते थे। So Gramsci says fascism is mainly a reaction to the emergence of socialism and the inability of liberalism to deal with war and economic crisis. अब लिबरल जो थे वो कहते थे कि नहीं, ट्रेड यूनियन करना मिसाल के तौर पे मजदूरों का हक है, हम ठीक है, उनको बुरा बड़ा लगता था अगर वो खुद कैपिटलिस्ट होते थे, मगर फिर भी वो कंसीड करते थे ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, इलेक्शन में हिस्सा लेना उनका डेमोक्रेटिक राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये वो लिबरलिज्म के कुछ कोर आइडियाज हैं कि भाई ये कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। तो फैशिस्ट ये कहते थे कि ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं ये ऐसे राइट्स दे रहे हैं लोगों को जिसको बोल्शेविक्स इस्तेमाल करते हुए, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सोसाइटी में तगड़ा कर रहे हैं, और तगड़ा करके वो सोसाइटी के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे। और ग्रामशी की अपनी थ्योरी भी यही थी ना
वो उसको पोजिशनल वॉर कहते थे कि भाई एक हेजेमोनिक ब्लॉक है लैंडलॉर्ड्स का, कैपिटलिस्ट का, उसके खिलाफ आपने काउंटर हेजेमोनिक ब्लॉक बनाना। वो जो काउंटर हेजेमोनिक ब्लॉक है वो कैसे बनाना है कि आप कल्चर में भी काम करेंगे, आप साइंस में भी काम करेंगे, आप एकेडेमिया में भी काम करेंगे, ट्रेड यूनियन में भी करेंगे, हर मुख्तलिफ इदारे में काम करके आहिस्ता 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 अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करते हुए आगे आएंगे। एक बड़ा अटैक नहीं करेंगे मगर छोटी छोटी लड़ाइयों से अपने आप को बिल्डअप करेंगे। तो इसको वो तोड़ना चाहते थे। So its class content cannot be ignored, says Antonio Gramsci, or else we will make a very superficial, we will make a very superficial analysis and we'll draw equivalents where equivalents cannot be drawn. So अगर हम इस बात को भूल जाएं कि फैशिज्म का एम एंड ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था और उसको बस ब्रॉडन कर दें और ये कहें वी आर ऑल अ बिट फैशिस्ट, तो यानी कि इट लूजेस ऑल एक्सप्लेनेटरी पावर और कोई समझ नहीं आती कि वो एक्चुअल चीज क्या थी, तारीख में वो तहरीक क्या थी, मूवमेंट क्या थी, उसका मकसद क्या था। सो इटालियन फैशिज्म से शुरू करते हैं जी। द वर्ड फैशिज्म कम्स फ्रॉम फैशियो व्हिच मींस अ बंडल ऑफ रॉड्स। ये देखें, ये बंडल ऑफ रॉड्स है और इसके साथ एक छोटा सा ब्लेड भी लगा हुआ है। तो ये एंशिएंट रोम में एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी होता था, ऑफ द सिविक मैजिस्ट्रेट, जो कि सिविक मैजिस्ट्रेट उस जमाने का जो है वो गलियों शलियों में भी फिरता फुरता रहता था। आज के वक्त के सिविक मैजिस्ट्रेट जो है वो तो अपने कोर्ट में बैठते हैं ना, मगर उस जमाने में मैजिस्ट्रेट जो है वो घूमता था और उसके पास ये डंडा होता था और अगर कोई बदतमीजी करे तो एक ठगा देता था। सारी बात है, और भी साथ उसके लोग होते थे, गार्ड्स गुड्स भी होते थे, अकेला तो नहीं होता था। तो इट वाज यूज्ड फॉर कॉर्पोरल और कैपिटल पनिशमेंट। इट कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर, एज यू कैन सी, इट आल्सो हैज अ ब्लेड एक्सेट्रा। तो उस जमाने में इट वाज अ सिंबल ऑफ इटालियन और रादर मोर प्रिसाइसली रोमन स्टेट अथॉरिटी का ये सिंबल था। तो उनको वो बड़ा एडमायर करते थे रोम को। आपने देखा है कि कई लोग जो इस पीरियड ऑफ हिस्ट्री के अंदर आए हैं वो कॉन्स्टेंटली रेनेसांस के बाद कॉन्स्टेंटली रोम को एडमायर करते आए हैं और कहते आए हैं कि किसी तरह वो दोबारा क्रिएट हो जाए, वो क्लासिकल ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन, और ये तो सारा डार्क एजेस एंड सो ऑन। तो ये भी जो फैशिस्ट थे वो भी कहते थे कि हाँ, वो जो एंशिएंट ग्लोरी ऑफ रोम है और खुद इटालियंस थे, वो रिक्रिएट हो जाए तो इटली की इटालियंस की मौज हो जाए, जबरदस्त हो जाए। तो इसलिए उन्होंने ये सिंबल अडॉप्ट किया और इसीलिए उनको फैशिस्ट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा हम वी आर द फैशिस्ट पार्टी। इट्स नॉट लाइक वो गाली निकाल रहा था ओए फैशिस्ट, वो खुद कह रहे थे अपने आप को यस वी आर फैशिस्ट। अब दिलचस्प बात इसमें यह है कि जो इटालियन फैशिस्ट मूवमेंट थी उसमें कोई एंटीसेमिटिज्म नहीं था। उसका गोल एंटीसेमिटिज्म था ही नहीं। उसमें एंटीसेमिटिज्म हमें नहीं कहीं पे नजर आता, मां सवाए उसके कि जब मुसलिनी ने बाद में जाके हिटलर से अलायंस किया तो फिर हाँ उसने कहा हाँ हाँ हिटलर भाई आप भी ठीक कह रहे हैं, ये ले हम भी थोड़ा एंटीसेमिटिज्म अपने लिटरेचर वगैरह में शामिल कर ले। मगर जब आप 20s में लिटरेचर उनका पढ़ते हैं, तो उससे पहले 1918 से आगे सारा लिटरेचर पढ़ते हैं, तो आप यू रीड थ्रू द होल लिटरेचर, तो आपको खास एंटीसेमिटिज्म इटालियन फैशिस्ट मूवमेंट में नजर नहीं आएगा। वो आपको नजर आएगा जर्मन नाजी मूवमेंट के अंदर, जो जर्मन फैशिस्ट मूवमेंट है। तो पहली तो मिसकंसेप्शन ये हो गई कि फैशिज्म जो है उसका जो मेन मुद्दा है वो एंटी सेमिटिज्म था, यानी कि यहूदियों को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। ये था एक मुद्दा, बट इन जर्मनी, नॉट एवरीवेयर। एंड फैशिज्म वाज नॉट जस्ट अ जर्मन मूवमेंट, एज आई हैव शोन यू। सबसे उसकी शुरुआत तो बेसिकली इटली से। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है फैशिज्म के बारे में कि फैशिज्म इज व्हाइट सुप्रेमेसी एंड आर्यन सुप्रेमेसी, और ये जो एंशिएंट सिंबल है ये आपको हिंदुइज्म में भी मिलेगा, अगरचे रिवर्स हुआ हुआ मिलेगा आपको। और ये बड़ा पुराना एक रिलीजियस सिंबल है जो कि आर्यन ट्राइब का सिंबल कह लें आप, और आर्यन सिंबल है ये। तो एक ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। ये बात गलत नहीं है इस सेंस में कि द नाज़ीज़ वर वेरी मच into these Aryan racialist theories. There's no doubt about that. But if you really look at the situation in Europe at the time, you discover कि बहुत सारे लोग उस वक्त racist ideas ही रखते थे। सिर्फ जो political movement थी जिसको हम कहते हैं fascism, वो नहीं सिर्फ, या जिसको हम Nazism कहते हैं, वो नहीं सिर्फ ये racist ideas रखते थे, मगर मैंने आपको दिखाया over the course of this semester कि बहुत सारे जो आपके liberals वगैरह थे वो भी इस किस्म के बड़े अजीबो गरीब रेसिस्ट आइडियाज रखते थे। वो भी कहते थे कि अफ्रीकन्स और एशियंस जो है ये इंफीरियर किस्म के लोग हैं, और चाइनीज वगैरह, और वो हायरार्की ऑफ रेसेस बनाते थे कि जिस सबसे नीचे जो है वो अफ्रीकन्स हैं, फिर जो है वो चाइनीज या एशियंस आ जाते हैं, और उसके बाद सबसे ऊपर जो है वो वाइट रेस है। ये वाइड स्प्रेड व्यूज थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे यूरोप के अंदर उस टाइम के अंदर। क्योंकि आपको याद होगा कि यही ख्यालात इस्तेमाल करते हुए व्हाइट मैन्स बर्डन का आइडिया और सिविलाइजेशन
सिविलाइजिंग मिशन का आइडिया और कॉलोनियलिज्म का पूरा आइडिया डेवलप हुआ था, जो कि बहुत हद तक इसी किस्म के रेसिस्ट आइडियाज पर बुनियाद रखता था। और फिर आप ये देखें कि उस पीरियड के अंदर अगर आप अमेरिका को देखें और खास तौर पे सदर्न अमेरिकन स्टेट्स को देखें, तो आपको नजर ही आएगा कि वहां पे तो जो ब्लैक पॉपुलेशन थी, जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन थी, उनके खिलाफ जो रेसिज्म था, वो तो आप जानते ही होंगे ना, फिल्मों से तो जानते ही होंगे कि वो बहुत शदीद किस्म का रेसिज्म था, और वो 1960s तक चलता रहा, जब फाइनली जाके मार्टिन लूथर किंग जूनियर वगैरह ने उसके खिलाफ सिविल राइट्स मूवमेंट्स वगैरह चलाई, तो वो तो 60s तक चल रहा था। तो वो भी को कम रेसिस्ट थोड़ी थे जो इतने सालों से अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन को जिन्होंने गुलाम बनाया हुआ था और उसके ऊपर पूरी आइडियोलॉजी बनाई हुई थी कि ये तो नस्ली गुलाम है, तो वो भी बड़े सख्त किस्म के रेसिस्ट लोग थे। तो रेसिज्म वाज नॉट एक्सक्लूसिव। द नाज़ीज वर रेसिस्ट, द फैशिस्ट वर रेसिस्ट, बट इट वाज नॉट एक्सक्लूसिव टू द नाज़ीज एंड टू द फैशिस्ट। तो देखें जी, अब आते हैं नाज़ीज़म की तरफ, विच इज बेसिकली द जर्मन फैशिस्ट मूवमेंट। अभी जो लफ्ज़ है ना फैशिज्म, ये ब्रॉड सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ लोग जो है ना दे डिस्टिंग्विश बिटवीन फैशिज्म एंड नाज़ीज़म, कि जी फैशिज्म जो है वो ठीक है, नाज़ीज़म बड़ा गलत था, क्योंकि वो कहते हैं फैशिज्म एंटी सेमिटिक नहीं था, नाज़ीज़म एंटी सेमिटिक था। बट बेसिकली द मूवमेंट्स आर द सेम, दे आर allies with each other, they share a lot of things together, etc. And you could say simply that Nazism was the German fascist movement. The fascist movement in Germany was Nazism. अब क्या जर्मनी का क्या मसला था, आओ पहले देखते हैं कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर शामिल हुआ। उनका मकसद ये था कि हमने एक बड़ा जर्मन एम्पायर बनाना, और इस जर्मन एम्पायर को उन्होंने बनाने की कोशिश की। शुरू में उनको बड़ी कामयाबियां मिली, फिर उनको बड़ी मार पड़ी, और उनको एक तरफ रशिया जो था उसमें इनकलाब हो गया, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया, और दूसरी तरफ जर्मनी के अंदर भी इतनी सारी जंग के बाद जर्मनी को डिफीट हुई, और जर्मनी ने ये फैसला किया कि वी आर गोइंग टू सू फॉर पीस। जब उन्होंने व्हेन दे सूड फॉर पीस, तो ये ट्रीटी साइन हुई कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये वर्ल्ड वॉर 1 को इसने एंड किया, और इसमें उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड वॉर 1 की जिम्मेदारी जो है वो जर्मनी पर है, हमारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी वजह से सारा मसला शुरू हुआ है, और लिहाजा अब जर्मनी को डिसआर्म भी करना पड़ेगा, अब जर्मनी को टेरिटोरियल कंसेशंस भी करनी पड़ेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उनको रेपरेशंस पे करनी पड़ेगी, उनको पैसे देने पड़ेंगे उन लोगों को जिन लोगों को उन्होंने तबाह बर्बाद किया है। In 1921, the total cost of these reparations was assessed at 132 billion gold marks, which is about $442 billion in 2023 prices. Now that doesn't sound like a whole lot for today because अब economy बहुत बड़ी हो गई है, but actually it's a very big amount for Germany to pay at that time. To pay this amount is a huge amount of money. तो क्या हुआ? At the end of World War I, Germany was exhausted. It had sued for peace. There was a revolution, in fact, against Kaiser Wilhelm II, and Germany became a constitutional federal republic. उससे पहले वो कोई democratic state नहीं था। अब ये एक constitutional और federal republic बन गया, जिसका नाम था Weimar Republic। ये 1918 के अंदर कायम हुआ। मगर अब क्योंकि Weimar Republic तो कायम हो गया और जो काइजर वगैरह तो हट गया जिसने इतनी बड़ी जंग की थी, मगर अब Weimar Republic को इतनी डेट देनी पड़ी, और उसकी वजह से ये हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि ये 1918 है जब जंग खत्म होती है, और फिर ये गोल्ड की टर्म्स में मार्क की कीमत है, और देखें ये कैसे जो है 1921 के बाद ओह यहां तक पहुंच जाती है। सो इट इज इनक्रेडिबल हाई अमाउंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अभी पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं 40% इन्फ्लेशन पे, तो आप देख सकते हैं कि ये तो 40% नहीं, ये तो थाउजेंड्स ऑफ परसेंट इन्फ्लेशन है। इतनी रैपिड इन्फ्लेशन है कि इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, बहुत ही ज्यादा थी, और इसकी वजह से लोगों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। और उसके बाद जब बेचारे इस इन्फ्लेशन से बाहर निकले तो 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गई, और वो भी एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना था। अगरचे स्टॉक मार्केट क्रैश तो वॉल स्ट्रीट में था, बट एक्चुअली इट हैड स्प्रेड ऑल अक्रॉस यूरोप। सारी इकोनॉमीज डिप कर रही थी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 1920s was a pretty terrible time to be a German, because the economic conditions were actually quite terrible at that time, and the Weimar Republic was stuck with this problem. अच्छा, Weimar Republic के अंदर अक्सर जो लोग डोमिनेट करते थे वो वहां की मार्क्सिस्ट पार्टी, that was became by this time, जो मार्क्स और एंगल्स ने पार्टी शुरू की थी, उसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ऑफ डॉइचलैंड। आज भी एग्जिस्ट करती है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ डॉइचलैंड। This is the party that Marx and Engels started actually. खुद उन्होंने स्टार्ट की थी, and by this time it had become such a huge party that it had become, in this period, Germany's largest political party. Can you imagine? So it was no joke.
अब क्या हुआ कि ये एक और नई पार्टी उभरी थ्रू द लेट 1920s and early 1930s. The Nazis gathered around electoral support to become the largest political party in their parliament, the Reichstag. अब ये क्या चक्कर था कि अगर आप माइन काम्फ बैठ के पढ़ें या हिटलर खड़ा है यहाँ पे, आप पढ़ें कि वो क्या चाहता था, तो वो कहता अपनी किताब में लिखता है कि मुझे तो आर्किटेक्चर का बड़ा शौक था, मुझे तो पेंटिंग का बड़ा शौक था, ऑस्ट्रिया में वो था और वगैरह। और कहता है वो एक ने उसने नौकरी वगैरह की वहाँ पे मजदूर भी काम करते थे, तो मजदूरों के साथ कहता है मेरी बड़ी डिबेट्स होती थी। तो सारे जो मजदूर थे ना वो बेसिकली थे सोशल डेमोक्रेट। सोशल डेमोक्रेट से मतलब ये है कि वो उस जमाने की जो मार्क्सिस्ट पार्टी थी उसके सपोर्टर थे, और उनकी प्रेस बड़ी ताकतवर है, और वो अपनी सारी किताब में लिखता है, कहता है मैं उनके खिलाफ आर्ग्यू करता था और वो मेरे से आर्ग्यूमेंट में बड़े आगे होते थे क्योंकि उनका बड़ा लिटरेचर होता था, बड़े एडवांस थे और ये थे और वो थे। फिर you see the turn even in Mein Kampf, and then he begins to say, make this new argument. हालांकि शुरू के सालों के अंदर कोई हिटलर के अंदर एंटी सेमिटिज्म नहीं नजर आता, कोई नहीं नजर आता। उसकी अपनी माँ जो है वो बड़ी बीमार थी, तो जूइश डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया वगैरह वगैरह। There's no anti-Semitism in Hitler's youth as such, but now he turns to anti-Semitism to basically attack the SPD, the Social Democratic Party of Deutschland, is the party that he wants to attack. And now he begins to say कि ये लोग जो है ना, this is a Jewish conspiracy. So he says, as opposed to the socialists, the Marxists, the communists, etc., we are not. अब इस वक्त, by the way, ये भी बात समझने की जरूरत है कि क्योंकि 1920s के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, 29 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन हो रही है, पूरे यूरोप के अंदर इनफैक्ट इस पीरियड के अंदर सोशलिज्म की एक स्वीप नजर आती है 20s में आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग। और सोशलिज्म इज अ वेरी कम्युनिज्म इज अ वेरी पॉपुलर आइडिया एट दिस टाइम इन हिस्ट्री, 30s 20s वगैरह। दिस इज काइंड ऑफ लाइक every intellectual you can think of, is pretty much on the left of center. And here's another interesting thing कि जो Jewish intelligentsia था वो बहुत pro socialist और pro communist भी था, और अक्सर जो leftist parties के जो intellectual leaders थे, Karl Marx himself of course, as you know, was Semitic in terms of his ethnicity. His father was Jewish. His father had already converted to Christianity, but Karl Marx looked like a Semite in terms of his features, etc. Darkish complexion and the rest of it. तो इसलिए ये इल्जाम भी बड़ा आसानी से लग सकता था कि ये तो जूइश कंस्पिरेसी, अगरचे एवरीबॉडी नोज कि मार्क्स तो रिलीजियस आदमी नहीं था, टोटली एथियस्ट था, मगर बहरहाल ये एक इल्जाम फिर भी लगता था। तो नाउ हिटलर टर्न्स टू एंटी सेमिटिज्म in order to combat the power of the Social Democratic Party of Deutschland. And in addition to that, he begins to argue the case that Austria must now combine, the German-speaking people must combine with each other in order to create a new German state, which will be an imperial German state. So the big things on his agenda in Mein Kampf are opposition to the Social Democratic Party of Deutschland, the unification of all German-speaking people, including Austrian German-speaking people with Germany itself, and the creation of an imperial German state, which was of course, the mission in World War I as well, and before that as well with Bismarck and so on. So ये सब कुछ करना. And the biggest impediment that he sees in that way are the pacifists and the leftists and the communists and the Marxists. So he presents this argument saying, because socialism की इतनी sweep है, he presents this argument saying कि ये जो socialists हैं, ये तो अपने आप को खुद कहते हैं ना कि हम international socialists हैं, हम मतलब है कि दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ, workers of the world unite, etc., etc. So we are not that kind of socialist. We are national socialist. जहां से वो नाम निकला, Nazi party. So national socialist meant Germany first, etc. We're going to put Germany first and national socialism ठीक है, और ये जो है ये तो एक Jewish Bolshevik conspiracy है. So actually the reason why he took up this nara was basically to defeat the main Marxist party of his time. So who were the fascists inspired by? They were inspired by this guy here in the corner, that is Nietzsche. They love Nietzsche. They were inspired by him. तो हाइनरिक हॉफमन की किताब है बड़ी फेमस, हिटलर एज नोबडी नोज हिम, जिसमें ये तस्वीर भी है और लिखा है, कोट द फ्यूरर बिफोर द बस्ट ऑफ द जर्मन फिलोसोफर whose ideas have fertilized two great popular movements, the National Socialist of Germany and the Fascists of Italy. So उनके लिए जो उनका ideological father है वो है नीचे. अब बहुत सारे लोग जो है ना आज इस बात को ऑब्स्क्योर करके कहते हैं कि नहीं नीचे का फैशिज्म से कोई ताल्लुक नहीं. ऑब्वियसली नीचे पहले वफात हो चुकी है नीचे की, so he's not around. But when they read Nietzsche, they said, this is our ideology, this is who we stand for. In fact, when Hitler met Mussolini for the first time, तो उसने उसको complete works of Nietzsche भी गिफ्ट किया, और नीचे की जो बहन थी एलिजाबेथ, उन्होंने उसको ग्रांट वगैरह दिया कि तुम नीचे का जो
वर्क है और काम है, इसको प्रिजर्व करो और इसको पॉपुलराइज करो एंड सो ऑन. सो दे वर देमसेल्व्स self-professed followers of Nietzsche. So National Socialist German Workers' Party utilized the economic and social discontent of the 1920s. They combined street fighting and anti-communist campaigning to become the largest party of Germany. जैसे मैं कह चुका हूँ, ऑलरेडी जर्मनी के अंदर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जर्मनी के अंदर जो इंटेलेक्चुअल डिवाइड अब तक हो चुकी थी ना, उसमें लिबरल्स तो हार चुके थे. जो दो बड़े ग्रुप्स बन चुके थे ना, एक नीचे के इर्द गिर्द बन चुका था, एक कार्ल मार्क्स के इर्द गिर्द बन चुका. और जो कार्ल मार्क्स के इर्द गिर्द था वो ऑब्वियसली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ डॉइचलैंड थी, और जो नीचे के इर्द गिर्द आया अब वो ये वाली पार्टी बनी, यानी कि नाजी पार्टी, NSDAP शॉर्ट में नाजी. एंड देयर मेन थिंग वाज कि इनको डिफीट करना है, यानी मार्क्सिस्ट पार्टी को डिफीट करना है. और आहिस्ता आहिस्ता अपनी एंटी कम्युनिस्ट कैंपेनिंग के साथ दे बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. But they did not have overall majority. They had about a third of the vote, 33% of the German votes. But they rapidly had gained a lot of votes, and सीटें उनकी ज्यादा थी, वोटों से भी ज्यादा थी. सीटें उनके पास तकरीबन 44%. And of course, once they had taken power, they accused the communists of burning the parliament, and then they banned the KPD, which was the even more radical party. That's the Communist Party of Deutschland. So there's the communists themselves now has split into two parties. One is called the Social Democratic Party, and the other is called the Communist Party. Communist Party, KPD, उन लोगों की है जो कि लेनिन और बोल्शेविक रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, और SPD उन लोगों की है जो कि कह रहे हैं कि लेनिन ने हैज फोर्स्ड द व्हील ऑफ हिस्ट्री बाय टेकिंग पावर इन अ बैकवर्ड कंट्री एंड सो ऑन, इसलिए हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे. सो दे आर काइंड ऑफ लाइक मोर लाइक रिफॉर्म कम्युनिस्ट और रिफॉर्म सोशलिस्ट्स, एंड दे बिकम व्हाट वी नाउ कॉल सोशल डेमोक्रेट्स, राइट, कि भाई हम इनकलाब नहीं कर रहे मगर हम थोड़ी थोड़ी तब्दीली करना चाह रहे हैं. और KPD अभी तक ये कह रही थी कि हमने रियासत का तख्ता पलट के मजदूरों की हुकूमत कायम करनी. सो ये दो बड़ी पार्टियां थी लेफ्ट की, और दोनों बड़ी ताकतवर थी. तो उसके बाद उसने बहरहाल KPD को भी बैन कर दिया, बाकी पार्टियों को भी बैन कर दिया, और इनेबलिंग एक्ट मार्च 23, 1933 में एब्सोल्यूट पावर अपनी जो है वो सिक्योर करके दूसरी पार्टियों को फारिग कर. हिटलर का 1933 रेडियो एड्रेस पढ़े, अपील टू द जर्मन पीपल. वो कहता है द वाइमार कोलिशन दैट रूल्ड द कंट्री सिंस नवंबर 9, 1918. अब ये वो कोलिशन है जिसमें लेफ्ट बड़ा स्ट्रांग है. Generated 14 years of Marxist rule, यानी कि under the Social Democrats, that dominated the other parties in the Weimar coalition. मतलब वो कह रहे हैं 1918 से लेके 33 तक basically Marxists were in power in Germany. Unless the German people reacted against this Bolshevism, there would be anarchy. Germany's fate was in the hands of Almighty God, and German voters, you can very clearly see that he was totally opposed to the Marxist movement. ये देखें, ये बड़ा interesting किस्म का पोल है. ये है SPD, which is the Social Democratic Party of Deutschland, ठीक है, and they have about 30% of the vote. You can see it's declining somewhat by 32, 33, etc. ठीक है, they still have about 20% of the vote. Coming up is the KPD, which had about 10% of the vote, but it's going up to about 16, 17% of the vote, and it becomes by the early 30s the second largest party. And then there are the other parties, etc., in the coalition. But coming from 2.6% only, a very small, tiny party, rapidly inclining to 37 and 33% of the vote, is of course the Nazi party, which manages to win that particular election. So you see, they rise very, very dramatically. So the conception that Hitler was somehow or fascism, Nazism was unpopular is not altogether correct. In fact, it was a popular movement. Not that it had 100%, 80%, 90%, 70%, 60%, even 50% of the supporters, but they had about a solid third of the German voters was with them. और इस तरह की मूवमेंट्स में अगर एक थर्ड कंट्री आपके साथ आ जाए, तो और इलीट भी आपके साथ हो, जो कि इलीट ऑब्वियसली हिटलर के साथ थी, तो बस फिर रियासत आप टेक ओवर कर सकते हैं और आप जो है इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं. So it's not the case that this was a tiny minority. This was a big movement with lots and lots of support, having at least about a third of the population with them. And in addition to that, the elite of Germany was also with them. So these movements were, why were these movements so popular with the elite? Because elite उस पुराने ज़माने में तो बड़ी liberal और ये वो सब कुछ होती थी, और Rousseau and सब कुछ, because the elite was terrified, again, as I've said repeatedly, of Bolshevism. So they saw fascism as the main defense against the Soviet Union and against communism. They said, this man can stop the Bolshevik menace. He's got the right tactics. Mussolini, Hitler, these guys are doing the right thing. Henry Ford जैसे लोग जो कि अमेरिका में बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं, oh, ये जबरदस्त, ये रोकेगा ट्रेड यूनियन मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट, बोल्शेविक मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट को, and so on.
So there was a lot of support for these guys on this basis कि भाई ये उनको रोके. So the other major misconception about Germany, as I've said, एक तो ये हो गई कि they were unpopular or something. It's not correct. Not that they had the majority. ये भी मैं misconception clear कर दूं. ये भी नहीं था कि हिटलर को 100% support मिला या even 50% support मिला. ये भी नहीं था. जो बाकी था उसने उसको फिर क्रश कर दिया, उसने उसको दबा दिया ना एक दफा. फौज उसके साथ आ गई, रियासत की मशीनरी उसके साथ आ गई, तो बाकी को उसने दबा दिया. दूसरी जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जी ये सिर्फ कोई जर्मन मसला था, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑनरस ट्रीटी थी, बहुत ही ज्यादा उन्होंने पैसे खींचे, हाइपर इन्फ्लेशन हुई. जब जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हुई तो लोगों ने रिएक्ट करके जो है ना लोग हिटलर के पास चले गए. ठीक है, ये बहुत पॉपुलर और आम थियरी है. बट व्हाट दिस डज नॉट एक्सप्लेन इज व्हाई द पीपल इन इटली गो दिस वे. इटली तो वर्ल्ड वॉर 1 में था ही नहीं. इटली पे तो कोई ट्रीटी ऑफ वर्साइल नहीं हुआ, इटली पे कोई वॉर रेपरेशंस नहीं हुई. देखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई दोस कंट्रीज जो विक्टोरियस थी वर्ल्ड वॉर 1 में वो क्यों फैशिस्ट हुई. कितनी दिलचस्प किस्म की बात है. जर्मनी चले, आप कहते हैं जर्मनी फैशिस्ट इसलिए हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में उनको डिफीट हुई और फिर उनको बहुत सख्त उन पे सजा दी गई उनको, तो इस वजह से वो फैशिस्ट हो गया. तो वो कंट्रीज जिनको सजा दी नहीं थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 में बल्कि जीते थे, वो क्यों फैशिस्ट हुए, ये सवाल है. तो कार्ल पोलियानी लिखता है, कहता है फैशिज्म अरोज, इट अपीयर्ड इन डिफीटेड कंट्रीज लाइक बुल्गारिया एंड इन विक्टोरियस वंस लाइक यूगोस्लाविया, in countries of northern temperament like Finland and Norway, and of southern temperament like Italy and Spain, in countries of Aryan race like England, Ireland or Belgium, and non-Aryan race like Japan, Hungary or Palestine, in countries of Catholic traditions like Portugal and in Protestant ones like Holland, in soldiery communities like Prussia and civilian ones like Austria, in old cultures like France and new ones like the United States and Latin American countries. तो ये क्या चक्कर है. तो फैशिज्म कोई सिर्फ किसी एक मजहब के साथ, किसी एक रेस के साथ, किसी एक क्या कहना चाहिए विक्टर या वैंक्विश्ड इन वर्ल्ड वॉर 1 के साथ नहीं जुड़ा हुआ था. एक वेव थी फैशिज्म की और बहुत सारे मुख्तलिफ लोग इसके अंदर शामिल थे. जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मुख्तलिफ डाइवर्स किस्म के लोग, प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक्स, ये वो शामिल है. सो व्हाट इज इट? इट्स अ पॉलिटिकल मूवमेंट. किसी की कल्चरल टेम्परामेंट की वजह से वो फैशिस्ट नहीं हुई, बल्कि देयर इज अ पॉलिटिक्स बिहाइंड इट. और वो पॉलिटिक्स जो है बड़े अरसे से चल रही है और वो हम जानते हैं क्या है. वो ये थी कि आपने देखा जब एनलाइटनमेंट और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारा मैंने पीरियड कवर किया, तो आपको याद होगा उसमें जोसेफ डे मेस्टर को मैंने कवर किया और भी लोगों को कवर किया. अब ये वो लोग थे जो काउंटर एनलाइटनमेंट, जो कहते थे एनलाइटनमेंट बड़ी बुरी चीज है, ये क्या हो गया है, आपने रिलीजन खत्म कर दिया है, आपने ये सब कुछ कर दिया है. और वो कहते थे, फॉर एग्जाम्पल, Johann George Hamann says, argued epistemology should be replaced by the philosophy of language. Reason is language. Now, this is classical postmodernism. But at the time, this was a counter-enlightenment idea. This was anti-science idea. अब ये postmodernism का हिस्सा बन गया और ये उस वक्त right, political right का हिस्सा है, conservatives का हिस्सा है. इसी तरह जोसेफ डी मेस्टर को तो आपने कवर भी किया कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को कितना खिलाफ था. Considerations of France आपने 1797 किताब थोड़ी सी उसकी जिक्र सुना है. Argued that the rationalist rejection of Christianity was directly responsible for bloodshed of the French Revolution. He argued against the universality of human experience. He anticipated betrayal and sacred is the defining feature of human existence according to him. ठीक है? So he was royalist, he was pro the church and so on and so forth, anti-French Revolution and anti also the whole Enlightenment project. George Bataille says was conceived as a secret society to stimulate a rebirth of the sacred of myth to combat materialism, secularism and individualism of contemporary European society. He was an unrelenting, believed in unrelenting iconoclasm. He had a visceral critique of reason. He wanted to rehabilitate the forces of instinct and so on. All of it are basically anti-rationalist ideas. And then the crown of the anti-rationalist point of view is actually Nietzsche. So this misconception that fascism is the product of the Enlightenment is, in my view, quite incorrect. Fascists generally admired those who were against the Enlightenment. वो प्रो एनलाइटनमेंट थिंकर्स को नहीं फॉलो कर रहे थे, वो रूसो को नहीं फॉलो कर रहे थे, वो वोल्टेयर को नहीं फॉलो कर रहे थे, वो लॉक को भाईजान नहीं फॉलो कर रहे थे, वो लिबरल्स को नहीं फॉलो कर रहे थे. वो उन तमाम लोगों को फॉलो कर रहे थे और उनको अच्छा लिखते थे, कहते थे, जो कि इनके खिलाफ थे. ठीक है? तो वन ऑफ द मेन इंस्पिरेशंस आई हैव सेड इज नीचे. नीचे जो कहता है जी क्रिश्चियनिटी जो है ये तो एक स्लेव मेंटालिटी है और ये यहूदियों की एक साजिश है. क्रिश्चियनिटी, यहूदियों ने हमारे अंदर स्लेव मेंटालिटी पैदा कर दी. पहले हम बड़े अच्छे थे, जब हम रोमन्स की तरह हुआ करते थे, हम परवाह नहीं करते थे, हम सिर्फ स्ट्रेंथ को एडमायर करते थे. अब हम वीकनेस को एडमायर करते हैं.
क्योंकि Christianity में तो ये लिखा है, let the meek inherit the world and so on. So we have to create a superman, a super race that would give rise to a new German empire. In fact, not just a German empire, but a European. He was much more of a European nationalist than a German one. And he argued for the death of truth, the death of reason, and he talked about the will to power. He says this becomes the new value of the world. It's just the will to gain power. Power is all there is in the world, etc. और इसी तरह हमें हाइडेगर नजर आता है जो कि ontological nihilism के लिए आर्ग्यू करता है. उसकी जो epistemology भी है उसके अंदर भी Dasein का मतलब है कि we don't recognize we don't recognize the thing in itself, but or the essence of anything or existence, etc., as a thing in itself or reason, etc., but as being practically engaged, being thrown into the world and so on. We won't get into these epistemological debates just yet. But this is the trajectory that you see from Meister through Nietzsche to Heidegger and so on. So Nietzsche now talks about great politics. A people is a detour of nature to get 6 or 7 great men. Great men are what are important. Baki to aap log jo hai na, bas you are just a detour. You're the side story for great men. कि हमने भी तैमूर रहमान का लेक्चर सुना था. स्टोरी तो मेरे बारे में, आपके बारे में थोड़ी है. Nietzsche कहता है, the time for petty politics is over. The very next century will bring the fight for the domination of the earth, the compulsion to great politics. So this was great politics. Great politics was the politics of great men. Who are the great men? They are the empire builders, the great, rulers, etc. Like in Athens, Alexander, Julius Caesar, Napoleon, etc. So the new philosopher can arise only in conjunction with the ruling caste as its highest spiritualization, says Nietzsche. Great politics, rule of the earth are at hand. यानी वो already ये कह रहा था कि great politics आने लगी है, जिसमें great कोई individuals आएंगे और वो पड़खचे उड़ा देंगे और एक नई किस्म की सियासत करेंगे and so on and so forth. और वो एक नए किस्म का Julius Caesar वगैरह बनाएंगे. He dedicated his work as assassination attempts, calling himself the apostle of active nihilism. So there's no meaning in life, etc., etc., and so on. So all the time, we think the opposite way in mainstream media, as if fascism is the result of instrumental rationalism. In fact, it's quite the opposite. It is, in fact, very much aligned with the philosophy of nihilism. Here is Nietzsche again. When the truth enters into the fight with the lies of millennia, that's, of course, Judaism and Christianity, we shall have upheavals, a convulsion of earthquakes, the like of which has never been dreamed of. The concept of politics will have merged entirely with a war of spirits. All power structures of the old society will have been exploded. There will be wars the like of which have never yet been on earth. It is only beginning with me that the earth knows great politics. Nietzsche अपनी CV लिखने में सबसे चीता आदमी था कि वो हमेशा कहता था कि मैं ही दुनिया की सारी चीजें शुरू कर रहा हूँ. Greatest writer भी मैं हूँ और मैंने great politics शुरू कर दी है and so on. When the fascists read this, they said, yes, they're talking about us, the creation of the German Empire. In opposition to the dwarfing and adaptation of man to a specialized utility, a reverse movement is needed, writes Nietzsche. The production of a synthetic, summarizing, justifying man, for whose existence the transformation of mankind into a machine is a precondition, as a base on which he can invent his higher form of being. A dominating race can grow up only out of terrible and violent beginnings. Where are the barbarians of the 20th century? यानी वो खुद कह रहा है कि where are the barbarians, आए और नीस्तो नाबूद करें और उसमें से एक नई खूबसूरत सिविलाइजेशन पैदा होगी और ये जो स्लेव मेंटालिटी इसको खत्म करें, जो बड़ी एक्सप्लिसिटली और ओपनली वो कह रहे हैं क्रिश्चियनिटी से हमें मिली है और यहूदियों ने क्रिश्चियनिटी एक तरह से पैदा, क्रिश्चियनिटी भी एक किस्म की यहूदी साजिश है फॉर नीचे और वो उन्होंने पैदा की और उससे हम कमजोर हो गए और ये सब खत्म होगा और we will once again be like the old Romans that only cared for power. That is the main thing. कहता है to expect that strength will not manifest itself as strength, as the desire to overcome, to appropriate, to have enemies is every bit as absurd as to expect that weakness will manifest itself as strength. No act of violence, rape, exploitation, destruction is intrinsically unjust, since life itself is violent, rapacious, exploitative, and destructive. So that's life. If I killed you and got your land, as the Israelis have done, and the Palestinians cry about the fact that our human rights kidhar gayi and so on. He says, that's life. That is just how life is. So it's all is fair in war. And now a master race will come about, he says. From now on, there will be more favorable preconditions for more comprehensive forms of domination, whose like has never yet existed. Or comprehensive domination होगी. अभी जो domination है, ये तो domination ही नहीं है. ऐसी domination होनी चाहिए कि सब उसके सामने लेट जाएं. The possibility has been established
for the production of international racial unions whose task will be to rear a master race, the future masters of the earth, a new tremendous aristocracy based on the severest self-legislation in which the will of philosophical men of power and artist tyrants will be made to endure for millennia. ओए हो 1000 साल जो है ये मास्टर रेस जो है वो क़यादत करेगी और इसके सामने सबको हमने जो ना ऐसी की तैसी फेर देनी सबकी. The higher party of life, यही जो master race, etc., which would take the greatest of all tasks into its hands, the higher breeding of humanity, हम नए अच्छे लोग पैदा करेंगे, including the merciless extermination of everything degenerate and parasitical, would make possible again that excess of life on earth from which the Dionysian state will grow again. So Apollonian state, Apollo का जो Apollo versus Dionysian is an old motif in Roman literature. Apollo is the person, is the god that is the god of reason, and Dionysius is the god of wine and instinct and passion and so on, and music also. So it's like, we don't need Apollo, we don't need reason, we need that barbaric instinct that will dominate and create this new master race based on, you know, just strength and nothing else. So this will create a new Superman with the transvaluation of all values. नई values पैदा होंगी. So this will, he was a great, by the way, proponent of manliness and will. And औरतों पे जो लिखता है, अगर आप पढ़ेंगे, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आपको एरिस्टोटल भी उसके मुकाबले में अच्छा लगना शुरू हो जाएगा. So he wanted the restoration of a virile and, if need be, cruel, Homeric aristocratic ethos that was subverted for 2000 years by the Judeo-Christian slave revolt in ethics. So जो गुलाम थे ना, ये हकीकत है कि जो आप तो जानते हैं कि यहूदी जो थे वो फ़िरौनों के गुलाम थे, और at least that's how the Jews present themselves in the Bible, correct? And जो Christians थे वो भी आप जानते हैं कि they were the underclass in the Roman Empire and the Roman state, so they were also very popular amongst the slaves, etc. So नीचे कहता है ये slaves की मूवमेंट थी, और ये गरीबों की और महकूमों की तहरीकें थी, क्रिश्चियनिटी भी, जूडिज्म भी, और इन्होंने जो एथिक्स पैदा किए ना सोसाइटी पे, जो आगे डोमिनेट कर गए, क्योंकि ये खुद डोमिनेट नहीं कर सकते थे, मगर इन्होंने हमारे साथ इंटेलेक्चुअल खेड ऐसा खेड़ा कि इन्होंने हमारी सोसाइटी के ऊपर, यूरोपियन सिविलाइजेशन के ऊपर एक ऐसी नई एथिक्स पैदा कर दी, विच वाज द एथिक्स ऑफ दैट that was the ethics of weakness rather than the ethics of strength. और इन्होंने स्ट्रॉन्ग को दबा दिया, और स्ट्रॉन्ग को जब उन्होंने दबा दिया तो उन्होंने हमारी सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ दबा दी. अब ये खत्म होगा सारा सिलसिला, तो फिर आगे जाके कुछ अच्छा और नया पैदा होगा. वो क्या हुआ कि म्यूजिक ब्रेक ये है कि नीचे की वफात हो गई, आपको पता ही है, और फिर नीचे साहब अल्लाह मियाँ के पास गए, और अल्लाह मियाँ ने कहा कि नीचे तुम अपने जिंदगी में खवातीन के बारे में कैसी ऐसी अजीबोगरीब बातें करते थे. मिसाल तौर पे वो ये कहता था कि खवातीन का कोई ऐसा मसला नहीं है जो प्रेगनेंसी हल ना कर सके, यानी बच्चा पैदा कर दो चुप हो जाएगी. जी हाँ. तो अल्लाह मियाँ बड़े नाराज हुए इस बात से, और अल्लाह मियाँ ने उसको वापस जब रीइनकार्नेट किया तो ही वाज रीइनकार्नेटेड एज अ गर्ल. एंड सो नीचे कम्स बैक and he had to sing this song. Anyway, what she's singing is, what doesn't kills you makes you stronger, live a little longer, you know, and so on. It's a breakup song, but she quotes Nietzsche. It's a breakup song, I know, but she quotes Nietzsche in it. And when I heard that song, ऐसी TV पे लगा हुआ था, oh my God, that's Nietzsche. I was quite shocked कि भाई, you know, pop music में एक philosopher का जिक्र हो तो. So ये Superman क्या चक्कर है, जो ये वो वाला Superman है, वो जो क्या नाम है उस एक्टर का जो बड़ा गुड लुकिंग है? हाँ. Why didn't you? I was seeing a Christopher Reeve, but चलो बहरहाल ठीक है. Anyway, so ये सुपरमैन क्या है जी? कहता है सुपरमैन who has to be a creator in good and evil truly was first to be a destroyer and break values. जो values हैं इनको तोड़ना पड़ेगा. Thus the greatest evil belongs with the greatest good. For evil, फर्क ही को नहीं पड़ा. इतनी जोर से मैंने चीख मारी कि आप बैठ जाएं या घबरा जाएं, आपको फर्क ही नहीं पड़ा. For evil is man's best strength, he says. Man must grow better and more evil. Thus do teach. The most evil is necessary for the Superman's best. So Superman here is actually much more like Lex Luthor than Superman, right?
mankind in the mass sacrifice to the prosperity of a single stronger species of man, that would be an advance, he says. So ये आप चीजें पढ़ रहे हैं ना, अब अगर आप जो है वो हिटलर हैं और ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आप इसे क्या सबक ले रहे हैं? आप ये सबक ले रहे हैं कि जर्मन इंपीरियलिज्म, माय कंट्री, माय स्टेट, दैट इज गोइंग टू रूल, दैट इज गोइंग टू rule for the next 1000 years. That's what Nietzsche is saying to me. A declaration of war on the masses by higher men is needed. ओए होए होए, जो स्ट्रांग है वो जंग करे गरीब के खिलाफ और मजलूम के खिलाफ और मैसेस के खिलाफ. A doctrine is needed powerful enough to work as a breeding agent, strengthening the strong, paralyzing and destructive for the world weary, the annihilation of the decaying races, domination over the earth as a means of producing a higher type. Now that's very explicitly what you would call Nazi eugenics, right? Elaborated here in Nietzsche. Epistemologically, Mussolini writes कि हम कोई enlightenment, scientific truth ये वो में believe नहीं करते. Philosophically कहता है, in truth we are relativists par excellence. कोई postmodernist ये पढ़े तो घबरा जाए, क्योंकि postmodernist आप जानते हैं relativists हैं. जब शुरू में पहली क्लास में मैंने आपके से पूछा आके कि what is justice, what is good, what is right, what is wrong, तो आप में से कितने लोगों ने कहा सर इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, सर रिलेटिव बात है, आपका लिए जो अच्छा है वो मेरे लिए हो सकता है बुरा है. तो भाईजान, यू आर इन गुड कंपनी, बिकॉज मुसोलिनी सेज द सेम थिंग. ही सेज इन ट्रूथ वी आर relativists par excellence, and the moment relativism linked up with Nietzsche and with his will to power was when Italian fascism became, as it still is, the most magnificent creation of an individual and a national will to power. So you see that very explicitly, you see the link here between anti-science, anti-enlightenment values and the whole imperial project together with the crushing of the left and socialist movement. For example, Stephen Eichmann writes, Nietzsche provided National Socialism with an intellectual father who had greatness and wit, whose style was beautiful and not abominable, who was able to articulate the resentment against both monopoly capitalism and the rising proletariat. So Nietzsche became their ideal. Last but certainly not least is the misconception that fascism was the continuity of the mass politics of the French Revolution, because some sort of irrationalism was unleashed by the French Revolution that became fascism, etc. But that's entirely incorrect. Joseph Goebbels, who was the main propaganda minister of the Nazi regime, writes in 1933, when the Nazi party won, what did he write? He writes, the year 1789 is hereby erased from history. हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को दफन कर दिया. हिटलर की कामयाबी फ्रेंच रेवोल्यूशन को दफन करने के बराबर है ना दिलचस्प बात. So they never identified with the French Revolution, the Enlightenment tradition, the liberals, the humanists, the Marxists, the socialists, none of that. They were all completely opposed to all of that project. So what was it that brought these fascists together? एक मैं आपको पीछे ग्राफ मैप दिखाना चाह रहा था जो बड़ा दिलचस्प है, वो ये वाला है. अब ये आप देखें, जो ब्लू एरिया है ये तमाम वो एरिया है जहां पे फैशिस्ट मूवमेंट कामयाब. और आप देख सकते हैं कि दिस इज प्रीटी मच ऑल ऑफ यूरोप. ठीक है, ये ऑब्वियसली जर्मन राइख है, विच इज जर्मनी, यानी हिटलर का स्टेट है एक्सेट्रा. ये ऑब्वियसली इटली है यहाँ पे, एंड देयर इन एन अलायंस एक्सेट्रा. और ये वो टेरिटरीज हैं जो उन्होंने जर्मन ऑक्यूपेशन में कॉन्कर कर ली हैं. और इनमें से अक्सर जो टेरिटरीज यूरोप में उन्होंने कॉन्कर की थी, दे वेंट विदाउट अ फाइट, बिकॉज रूलिंग क्लास जो थी, दे इनफैक्ट वेलकम्ड the German troops many a times into their country, especially they were German speaking, जिस तरह इस एरिया के इर्द गिर्द था. उन्होंने तो बहुत स्ट्रांगली वेलकम किया, मगर दूसरों ने भी वेलकम किया. क्यों? Because they felt that the red menace would be stopped by Nazism and the fascist movement. और आप देख सकते, और उनका झगड़ा यूके, अच्छा बाय द वे स्पेन को भी यहाँ पे न्यूट्रल दिखाया हुआ है, which is true with respect to World War II etc. But you know कि स्पेन के अंदर भी बेसिकली प्रो फैशिस्ट regime थी, which was the regime of General Franco, which had also crushed the left in the 30s, in the early 30s, which was the Spanish Republic. They had crushed it, etc. And so this was also basically pro-fascist. And Portugal को भी neutral है, which is true for World War II, yes. मगर Portugal के अंदर भी fascist dictatorship रही, जो 1975 तक कायम रही, सालाज़ार की dictatorship.
और स्वीडन को भी यहाँ न्यूट्रल दिखाया हुआ है, बट इन रियलिटी स्वीडन कंटिन्यू टू ट्रेड विद जर्मनी, दैट्स ऑल्सो देयर, बट इन द वॉर इटसेल्फ दे वर न्यूट्रल, दैट्स ट्रू। स्विट्जरलैंड आप देखें यहाँ बीच में बैठा हुआ है, वो साथ के सिक्के थे फंस गए हैं, वो सोच रहे हैं। तो एनीवे, अब यूके और ये और यू नो फ्रांस तो ऑब्वियसली हैज बीन कॉन्कर्ड एक्सेट्रा बाय द Germans. There was a very strong also pro fascist party in each of these countries etc, welcoming the fascists and the Nazis etc. अब ब्रिटेन के साथ जो फटा पड़ेगा जर्मनी का और अमेरिका के साथ भी, और टू सम एक्सटेंट चार्ल्स डिकॉल और यू नो फ्रेंच के साथ भी, वो यही पड़ेगा कि इनका पूरा इंपीरियल स्टेट है भाईजान। ये देखो यहाँ पे भी जर्मन्स पहुंचे हुए हैं, तो जो पूरे का पूरा empire है, British Empire, now they feel that their empire is going to be taken over by the Germans or by the Japanese in Burma, etc., who are the allies of the Germans. So, for that reason, now you can see that the entire Europe, basically, by the time that World War II erupted with the Soviet Union was fighting not just Germany, they were fighting all these states. The whole of Europe they were fighting. So it was a huge, huge war that you can't imagine. So that's why I say कि जब हम fascism की बात करते हैं as just a German phenomena, it's ignoring the larger phenomena that's going on across Europe, which is that fascism, Nazism, whatever you want to call it, is a European-wide phenomenon. So to conclude then, what was it that united all these different people? It was basically an alignment against Bolshevism. Fascism's greatest political asset lay in her ability to compel the countries of the world into an alignment against Bolshevism, writes the famous scholar Karl Polanyi. And I think that's absolutely correct. That was the centerpiece of their whole political project, कि हमने Bolshevism को खत्म करना है. Now, think of a parallel, because अभी पिछले हफ्ते ही आपने French Revolution भी पढ़ा है and so on. Think of a parallel. आपको याद होगा जब French Revolution मैंने पढ़ा है 1789 में जब French Revolution होता है, so nearly all the powers of Europe get together to crush that revolution, right? The English provide all the money, the Russians are fighting, the Austro-Hungarian Empire is fighting, the Prussians are fighting, and the French eventually defeat all of them, right? They also get defeated several times, but Napoleon, jiski film bhi aa gayi if you want to watch it, so, you know, fights those wars and wins the revolution. But the whole of royalist Europe, basically, that wanted the restoration of the Bourbon dynasty monarchy in Spain, in France, they basically, all the kingdoms of Europe united के France के अंदर जो ये अजीबो गरीब किस्म की enlightenment, republic, democracy वगैरह ये वो जो भी पैदा हुई, इसको खत्म करके दोबारा से वहाँ पे बादशाहत कायम की जाए। तो बिल्कुल उसी तरह जब Russian Revolution हुआ, तो pretty much all of Europe united now to basically crush the Bolshevik Revolution. So it's the same thing, except the two revolutions are of course not the same. One is what we call a bourgeois democratic revolution, in the sense that it's a revolution that establishes capitalism. The other is a revolution that finishes capitalism. But in both instances, you see that each revolution triggers European-wide reactions to crush it. So all the powers of Europe combined in the 1920s and 30s to fight then in the 40s, the World War II, to destroy, you know, what they considered to be the Red Menace. सिर्फ फर्क ये था कि German drive for its own empire drove some of the allies into a temporary pact with the USSR against fascism during World War II. That was, of course, the United States of America. When it got attacked in Pearl Harbor by the Japanese, it decided we're going to step into the war. And England, which of course also had a lot to lose from the Japanese in Burma, etc., and also from the Germans across Europe and so on. So they decided, Churchill, कोई ये तो नहीं कि कोई सोवियत यूनियन का दोस्त था या सोशलिज्म उसको बड़ा पसंद था, बड़ा खिलाफ था उसके, मगर उसकी मजबूरी ये थी कि भाई मैंने अगर ब्रिटिश एम्पायर को बचाना है तो मुझे फिर ये मनूवर करना पड़ेगा और मुझे सोवियत यूनियन के साथ दोस्ती करके जो है ना फैशिज्म को डिफीट करना पड़ेगा. So that's how they got into the war. So Hitler finally on communist Russia says, never forget that if there's any doubt left, by the way, in your mind, कि हिटलर का मकसद क्या था, मकसद उसका खुद ही वो लिखता है, never forget that the rulers of present day Russia are common blood-stained criminals, that they are the scum of humanity which, favored by circumstances, overran a great state
in a tragic hour, slaughtered out thousands of a leading intelligentsia in wild bloodlust, and now for almost 10 years have been carrying on the most cruel and tyrannical regime of all time. So that is basically what fascism was all about.